In a major boost to India's naval might, Prime Minister Narendra Modi commissioned India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, in Kochi. INS Vikrant is not a mere war machine, but proof of India's skill and talent, Prime Minister Modi said while commissioning the majestic naval vessel at Kochi shipyard in Kerala. Calling it a historic moment, PM Modi said that India's largest and indigenously made aircraft carrier is a unique reflection of India's commitment to becoming Atmanirbhar. He said Vikrant, which means victorious, is huge, massive and vast. The Prime Minister also said that every Indian is witnessing the sunrise of a new future. यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। On the occasion, Prime Minister Modi also unveiled a new naval ensign which is inspired by the seal of the Maratha king Chhatrapati Shivaji Maharaj. Prime Minister said that in adopting the new naval ensign, India has removed a burden of slavery off its chest. With this, India has entered the select league of nations with domestic capability to develop such large vessels. INS Vikrant is Indian Navy's second operational aircraft carrier and the largest warship ever built in India. INS विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। INS विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है।